नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें हर रोज हंगामा हो रहा है। पक्ष और विपक्ष, सत्ता दल और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई दिख रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि चुनाव सुधारों के मुद्दे पर जबरदस्त टकराव की स्थिति है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से चुनाव सुधारों के मुद्दे पर सरकार समेत चुनाव आयोग पर कड़े सवाल उठाते हुए उन्हें घेरा गया और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी सबसे बड़ा देश विरोधी कृत्य है। आज आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बात रखेंगे, सरकार की अपना पक्ष रखेंगे, भाषण देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी लोकसभा में बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से जो बयान दिए गए, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने वोट चोरी का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का चुनाव चुराया गया। महाराष्ट्र को लेकर भी राहुल गांधी ने इसी तरह की बात की और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से रूलिंग पार्टी का कब्जा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई मांगे भी रखी हैं और आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का भाषण होने वाला है चुनाव सुधारों के मुद्दे पर। सबकी नजरें अमित शाह के भाषण पर है कि किस तरीके से राहुल गांधी के आरोपों पर वो जवाब देंगे, किस तरीके से आरोप लगाए जो राहुल गांधी ने उन पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे, केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। लेकिन इस बीच ये जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी ने किस तरीके से सरकार को घेरा और चुनाव आयोग समेत तमाम जो संस्थाएं हैं उनको लेकर सरकार पर जो आरोप लगाए, उसमें क्या कुछ कहा गया। सुनाते हैं आपको राहुल गांधी के भाषण के वो अंश। Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we are not just the biggest democracy, we are the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this country. And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it, I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs. CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Yes. Let our experts go and see what is inside the EVM. Yes. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that
They might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this country. And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it, I know they're destroying it, and they know they're destroying it. तो सीधे तौर पर नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाया गया कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाया जा रहा है सरकार की ओर से, जिसमें पूरी तरीके से चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया गया है। उन्होंने लगाया आरोप ये भी कि जो वोट चोरी है वो सबसे बड़ा देश विरोधी कृत्य है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई मांगे की, जिसमें उन्होंने कहा कि मशीन रीडेबल डेटा हमें प्रोवाइड किया जाना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए। तमाम बातें करते हुए राहुल गांधी के इस भाषण पर जोरदार बहस देखने के लिए मिली। संसद में कल काफी हंगामा हुआ। आज गृह मंत्री अमित शाह संसद में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बात रखेंगे, भाषण देंगे और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि किस तरीके से राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हैं गृह मंत्री अमित शाह। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर दरअसल कर्नाटक से है। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, बल्कि कई हफ्तों से जो चर्चा चल रही है वो ये चर्चा चल रही है कि क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए इस कार्यकाल को 2.5 साल का वक्त बीत चुका है और ऐसा चर्चा लगातार की जा रही है कि जब कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता था और उस वक्त पर जब मुख्यमंत्री का चयन किया जा रहा था तो सामने दो चेहरे थे, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। तब अंदर खाने ये तय किया गया था, ये फॉर्मूला सेट किया गया था कि पहले जो कार्यकाल के 2.5 साल होंगे उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धारमैया के पास रहेगी और फिर बाकी 2.5 साल डीके शिव कुमार के पास रहेगी। अब सिद्धारमैया को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए, तो डीके शिव कुमार कैंप के जो एमएलएज हैं, जो नेता हैं, वो सक्रिय हुए और उन्होंने ये प्रेशर बनाना शुरू किया, दबाव बनाना कि अब डीके शिव कुमार को नेतृत्व सौंप देना चाहिए सरकार का। और इस वजह से कई जो डीके शिव कुमार कैंप के एमएलएज हैं वो दिल्ली भी आए थे यहाँ पर आला कमान से मुलाकात करने के लिए, और उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई भी थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को लेकर जो पावर शेयरिंग पर चर्चा हो रही है, उस चर्चा पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं सिद्धारमैया की ओर से कांग्रेस सांसदों को। उन्होंने कांग्रेस लेजिस्लेटर मीटिंग में ये बात कही है कि पावर शेयरिंग को लेकर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा, कांग्रेस एमएलएज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी, किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन जो है वो अब इस पूरे मुद्दे पर नहीं फैलाया जाएगा। साथ ही साथ जो सोर्सेज के हवाले से खबर है उसमें ये बात सामने आई है कि जो कांग्रेस के एमएलएज हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से ये कहा है कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फंड्स और रिलीज किए जाने चाहिए। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बात नहीं सुन रहे हैं, वो बात नहीं मान रहे हैं, इस वजह से काम जो है वो बाधित हो रहा है। ये तमाम चर्चाएं भी इस बैठक में हुई हैं मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की, और उसमें ये भी बात निकल कर आई कि सिर्फ जो
स्कीम जो गारंटी स्कीम्स हैं उनके भरोसे नहीं रहा जा सकता। ज़मीन पर काम होना भी ज़रूरी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना ज़रूरी है। डेवलपमेंट फंड्स को अब और रिलीज़ किया जाना ज़रूरी है। इस तरह की कई कांग्रेस के एमएलएज ने जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के साथ उसमें ये बात कही है। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिनों जो पावर शेयरिंग का मुद्दा है वो चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा रहा, सुर्खियों में रहा, जिसमें ये भी जानकारी सोर्सेज के हवाले से निकल कर आई कि सोनिया गांधी ने अब इस पूरे मामले पर मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से 3 घंटे तक मीटिंग की डीके शिव कुमार की फाइल को लेकर। और बीते दिनों लगातार डीके शिव कुमार के भी कई बयान सामने आए थे, जब उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के टॉप 5-6 लीडर्स के सामने मुख्यमंत्री पद को लेकर फॉर्मूला जो है वो तय हुआ था। उन्होंने ज़्यादा इस पर और आगे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि इससे पार्टी को कोई नुकसान हो, पार्टी की छवि को कोई नुकसान हो। लेकिन बीते दिनों हमने देखा कि कर्नाटक में पावर शेयरिंग का मुद्दा जो है वो सुर्खियों में छाया रहा, और सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि देश भर में इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हुई। बीजेपी ने भी कांग्रेस के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के अपने ही लोग, कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो कांग्रेस के एमएलएज को खरीद रहे हैं। दोनों तरफ से जो कैंप की बातें होती हैं, सिद्धरमैया कैंप और डीके शिव कुमार कैंप, उनमें टकराव की बात बताई गई। लेकिन फिर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के साथ हमने मीटिंग देखी मल्लिकार्जुन खड़गे की, और फिर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया एक दूसरे के घर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे और ये दिखाने की कोशिश की गई कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सरकार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया का जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलहाल देखना होगा कि क्या वाकई पावर शेयरिंग की जो लेकर चर्चा हो रही है कर्नाटक में, वो चर्चा अब ठंडे बस्ते में चली गई है, या फिर कर्नाटक में सीएम चेहरे को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट जल्द हो सकता है। फिलहाल इसके लिए तो इंतजार करना होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर पर। अगली खबर वो है जिस खबर ने देश भर में लोगों की चिंताएं बढ़ाए रखी। दरअसल खबर है इंडिगो से जुड़ी हुई। जी हाँ, इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स पिछले हफ्ते भर में हमने देखा कि लगातार कैंसिल और डिले होती रही। दिल्ली से लेकर मुंबई, अहमदाबाद, तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर पैसेंजर्स के परेशान होने की तस्वीरें, या वहाँ पर बढ़ती भीड़ की तस्वीरें, या उनकी आप बीती की वीडियोस लगातार हम सोशल मीडिया पर देखते रहे और लगातार हम इसको कवर करते रहे। अब इंडिगो पर एक्शन हो चुका है, सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई हुई है, जिसमें सरकार ने इंडिगो की 10% जो फ्लाइट्स हैं उसमें कटौती कर दी है। ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सरकार की ओर से इंडिगो की फ्लाइट्स को 10% कट किया गया है, 10% कटौती की गई है और उसको दूसरे एयरलाइन ऑपरेटर्स को दिया गया है। ये एक बड़ा एक्शन हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने तमाम एयरलाइंस के ऑफिशियल्स के साथ, सीईओज के साथ मीटिंग की थी, और इस मीटिंग का एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें इंडिगो के सीईओ हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो तस्वीर है ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इंडिगो फ्लाइट्स के कैंसिलेशन और डिले की वजह से देश भर में जो यात्री हैं वो परेशान होते हुए नजर आए, और लगातार दिल्ली एयरपोर्ट पे भी कई सौ फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई, वो डिले हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर भी यही हाल देखने के लिए मिला। गोवा से लेकर गुजरात और राजस्थान से लेकर तमाम देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर देखने के लिए मिला कि फ्लाइट्स इंडिगो की लगातार कैंसिल हो रही हैं। और फिर ये भी जानकारी मिलती रही कि जो कैंसिलेशन हो रहा है उसके बाद रिफंड नहीं किया जा रहा कंपनी की तरफ से, जो पैसेंजर्स का लगेज है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर सरकार की भी बहुत किरकिरी हुई। तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से सरकार पर सवाल खड़े किए गए और पूछा गया कि आखिर क्यों सरकार इंडिगो पर कार्रवाई करने में देरी कर रही है। हालांकि बीते दिनों हमने देखा कि डीजीसीए ने जांच शुरू की और इंडिगो से
इस पूरे कियोस्क को लेकर, इस पूरी अफरा तफरी को लेकर जवाब भी मांगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने संसद में बयान दिया। क्या कुछ कहा था उन्होंने, वो आपको सुना देते हैं। The disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. Indigo's daily flights, which had fallen drastically to 706 on 5th of December, have recovered to over 1,800 flights yesterday and are expected to rise further today. All other airlines continue to operate smoothly across the country, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing, and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. तो आपको बता दें कि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने संसद में ये बात कही थी कि जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस की वजह से देश भर में लोगों को परेशानी हुई, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त एक्शन ले रही है। और उसके बाद एक्शन लिया गया, इंडिगो की फ्लाइट्स में 10% की कटौती की गई और वो दूसरे एयरलाइंस को ऑपरेट करने के लिए वो जो फ्लाइट्स हैं वो दी जा रही हैं। इस बीच सीधा लिए चलते हैं आपको लोकसभा में, जहां पर केसी वेणुगोपाल चुनाव सुधारों के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 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 Sir, yesterday this was one instance. Honorable Law Minister has to answer. You didn't answer the question of LOP yesterday. You have done so many tamashas, but you didn't answer the real questions put by LOP and other opposition leaders. What was the reason? What was the reason for making a law to give immunity to the Election Commission of India? Yes. No. What was the what? You didn't answer it. You can verify. The real question of this country is that till 2023, so many Election Commission was there. Brave, neutral, dynamic election commissions were there. Nobody got this immunity. Nobody asked this immunity. Yes. Why this demand of immunity for the election commission came now, 2023? No. There is an answer, Minister. Because of the guilty conscience of the election commission and the government. You know that you are violating the basic principle of democracy. Sir, okay, sir. Yeah, sorry. You are violating the basic principle of democracy. You are completely trying to destroy the democracy. That is why now election commission needs this immunity. This is impunity for the crime, sir. Yes. This is going to be a lifetime washing machine procedure. Basically, this immunity is going to be an impunity for crime. Yes. Again, I am repeating, this is the all-time washing machine. Get out of jail card. Sir. Stay out of jail card. Sir, I think whenever Parliament is enacting a law, we are all here because of this democratic vote. We are all here because of the vote. Whenever we are enacting a law regarding the basic fundamental principles of democracy, you are doing actually murder of democracy through this legislation. That was happened in 2023. Sir, after this 23 got immunity, then election commission selection process now become Prime Minister, Home Minister. Now what was
I saw in my childhood itself, sir, I am witnessing the conduct of election commissions, their actions. Sir. During the election time, there should be a level playing field for all political parties. That was the general principle. That is why the election commissions of India, many point of time, strongly came forward to protect the neutrality of the commission. Now, you can see that in your state, sir, in your state, 2024, Banswara, Rajasthan, our Honorable Prime Minister spoken about. The Congress manifesto is saying that they will calculate the gold of the mothers and sisters, get information about it, and then distribute it. Brothers and sisters, these urban Naxals thought will not let even your Mangal Sutra escape. They will go this far. This was the Prime Minister's speech in Banswara 2024. Sir, my point is that. एक मिनट ऐसे नहीं करते हैं फिर एक मिनट माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एक मिनट प्लीज माननीय सदस्यगण, मैं इतना सा आग्रह करता हूं कि हम बाहर के स्टेटमेंटों पे जाएंगे ना तो दोनों तरफ से बहुत स्टेटमेंट बाजी होगी, इसलिए अपन जो बोल रहे हैं आप कंक्रीट बात बोले। हाँ, कई लोग आम सभाओं में बोलते हैं ये सदन है, सदन आम सभाओं में अंतर होता है चीजों। माइक चालू है एकदम। Sir, this is a discussion of electoral reforms. When we discussing up the electoral reforms, we need to point it out all these issues, sir. Sir, when we complained about this code of conduct violation by the Prime Minister, Election Commission, what they have done, sir, they have forwarded our letter to JP Nadda ji, BJP President. This was the Election Commission. Accordingly, I am directed to forward a copy of the representation dated 21/4/2024 made by Indian National Congress, representation dated 23/4/24 made by the Communist Party of India, and representation dated 21/24 to the BJP National President. So Prime Minister spoke all these things. The same day one manipulated complaint came against Rahul Gandhi. Yes. That also given to. My point is, sir, that where was the neutral umpire? Yeah. This was my question, sir. Why I am talking all these things? Where was the neutral umpire, sir? Sir, this is very, very disturbing, sir. Sir, election time, every political party will promise some schemes, some benefits to voters. Quite natural, through manifesto, or the government also can do schemes, no problem. But just before the election, one day before the election, putting money into the bank account of the voters and telling the voters in the polling booth that this will not repeat if you are not voted for BJP. Is it not a violation, sir? Is it not a violation? Sir, this is what happening, sir. This is what happened in Bihar also. My Bihar friends know that. In polling booth, what happened in Bihar, everybody know that. Sir, this is very much unfortunate, sir. Sir, now I am coming to SIR, sir. Yesterday, Honorable Minister spoke about SIR. This is not new things. In your term was also SIR was there. My term SIR copy is with me. 2004, this is the order of that Election Commission of India, 2004. 6-month procedure. Yes. That is not before the election. Yes. They deferred the SIR of Arunachal Pradesh and Maharashtra due to the election. Maharashtra and the Arunachal Pradesh was going for election. That point of time, Election Commission deferred the
process of intensive revision of that Maharashtra and Meghalaya, Arunachal Pradesh. Now what you are doing, just before Bihar election, 2 months before election, you started SIR. Now Kerala, Tamil Nadu, Assam, Pondicherry, Bengal, all state going for election. Just before the election, you started SIR. That too, total procedure, earlier procedure was 6 months. Now it was 2 months point something. After Supreme Court intervention, some extension happened. What was the intention, sir? I don't know. JP Naddaji is not here. I don't know. In Bihar, some strange thing is happening, sir. In Bihar experience, sir, some estimate put the total deletion is 65 lakh SIR. This is the single largest deletion of voters in one stroke since independence. The worst it was marginalized communities. At the same time, as per the independent survey, 1.5 lakh, yesterday LOP told about that. Genuine voters were related. I am also one of the petitioners in the Supreme Court for my party, sir. The case is still going on. That way, only because of the Supreme Court intervention, Aadhaar card, ration card, land records of old NRC, style question, enter electoral votes, the danger is not hypothetical. It is existential, sir. Our concern is, sir, for example, not for Congress Party, former election commissioner, I can quote what Ashok Lavasa cautioned that Election Commission of India through such an SIR is undermining public trust. He described this exercise in Bihar as unprecedented in the ECI history. He warned that its methodology will set troubling precedents if expanded nationwide. Former CEC S.Y. Qureshi described the Bihar experience as an epic exclusion. Sir, Hindu has done a little bit study of a national newspaper, and they focused on the 65 lakh voter deleted from the draft electoral roll. They came out with some interesting data. That is why I am searching for our Honorable Health Minister, BJP President Naddaji was here or not. Because of Bihar, sir, what happened? 80 assembly parts showed an unusually high proportion of young deaths. In these areas, more than half of the deceased voters were under the age of 50. For example, at one polling station in Bhagalpur, 50 out of 58 total deaths were of individual under 50. Sir, one polling station, 58 names deleted due to death. After that 58 death, 50 people are under 50 years. That's a very serious concern, sir. If the government of India has to have a concern of young death, they have also 58 people dying in a booth. After 58, all 50 people are below 50 means. What is the health ministry is doing, sir? Yes. This is a clear-cut example of SIR misuse. I'm very worried about all these things, sir. This hurried SIR, what happened in my state, sir? One poor employee was a BLO in northern Kerala, Kannur district. He suicide, sir. In your state, how many people suicide, sir? In your state, BLOs. In our state, 40. Sir, who will reply the family of the deceased person, sir? Because of this hurried experiment, hurried exercise, entire BLO got so much pressures, and they are not in a position to overcome this pressure. That is why they committed suicide. Lot many valuable life had been spoiled. So my question, when all the learned members are here, we all know about the Election Commission's procedure. Whenever an electoral reforms is happening, they will consult with the
stakeholders. Who are the stakeholders in this election process, sir? Mainly political parties. Sir, whenever you are going for a reform in elections, usually election commission will consult with the political parties and take a common view about how to move forward. In Kerala, sir, entire state assembly, unanimously, state assembly, all political parties, except BJP, sir, they unanimously passed the resolution because local body election is going on. The calendar of SIR is completely same with the local body elections dates. Therefore, Assembly unanimously passed the resolution and sent it to Election Commission and Government of India that at least you postpone this procedure. Then, what happened? Not only that, chief electoral officer of the state, the officer of the election commission in the state, he also told that it is very difficult now to this SIR, better to postpone SIR. All the political party, Chief Minister convened a political conference of political party, all political party except BJP demanded this. For whom, sir, political party didn't want now, electoral officer didn't want now, sir, for whom Election Commission of India is acting. Yes. Basically, my question is that Election Commission of India role in these things is not total at all. This is what I want to say, sir, but before, I think now after the intervention of the Supreme Court, now they are postponing. Is that the way, sir? Without judicial intervention, तो केसी वेणुगोपाल इस वक्त लोकसभा में बोल रहे हैं और चुनाव सुधारों के मुद्दे पर लगातार चुनाव आयोग को घेरते हुए कांग्रेस सांसद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे चुनाव सुधार को लेकर और उन्होंने बड़े सवाल पूछे थे और आज केसी वेणुगोपाल यहाँ पार्लियामेंट में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में चुनाव सुधारों के मुद्दे पर बोलने वाले हैं और क्या कुछ वो कहेंगे उस पर नजर रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।